or I'll first brief you what is deep learning, because deep learning ke andar you have RNN. So we will first understand what is deep learning, then we will talk about RNN, and then we will be getting into NLP, the major things that we need to discuss. So what happens is, if I try to explain you where this deep learning falls. So I'll just draw this figure. Let's say this is your artificial intelligence. Okay. This circle, this is denoting artificial intelligence. Inside this circle, you have something known as, inside this circle, you have something known as machine learning. Okay. So machine learning is what? It is a subset of artificial intelligence. And inside machine learning, you have something known as deep learning. Okay. And deep learning ke andar you study NLP, you study computer vision, all those things. So your matter of relevance is this one. Okay. So it is essential for you to first of all understand deep learning, then only we can get into NLP, right? So what we will do is, let us first briefly understand what is deep learning. So deep learning में क्या होता है कि deep learning as a topic or as a subtopic of AI, I would say, is a very new advancement. It is not something very old. For example, if you consider machine learning is an old concept, but deep learning is something very new. Okay, so deep learning is something very new, and in recent times, it is gaining a lot of importance also, be it studies or job, whatever. So deep learning is gaining a lot of importance. There are multiple reasons for it also, right? Because deep learning, the concept of deep learning is highly inspired from human nervous system. Okay, so the way how our nervous system works, in the same way, or it mimics actually the human nervous system. So if you recall your school days, wahan par we used to study these kind of figures with respect to your I can say nervous system, है ना, ऐसा कुछ रहता था इस टाइप का आपका dendrites, dendrons were there, and then this was supposed to be the nucleus basically, right? This was the nucleus. So this is what, this is one particular strand of your, I can say, nervous system. And just like this, you have multiple other strands available in the entire human body. So this is human nervous system. Okay. And isse milta julta, from this, it has been like the entire concept of deep learning has been inspired. So here, the thing which you have, the most important thing that you have is the nucleus, right? So nucleus is kind of mimicked here in case of deep learning as a neuron. So we don't call it as a nucleus in case of deep learning. We rather call it as a neuron. Okay. Or at times you will hear people saying something known as a perceptron. Okay. So how is it going to look? Deep learning, we talk about neural networks. Okay. We talk about neural networks. Okay. So how is this neural network going to look? It is going to be something like this. I'll just draw a simple neural network for you, then we will get deep into it. Okay. So let's assume this is a very simple neural network. What are these? These are your nucleus, or you can say neurons. Okay. Fine. So whatever you are going to learn, this architecture or this structure is going to remain the same. If you are learning NLP or if you are learning computer vision, kuch bhi, this structure is going to remain the same because this is the fundamental structure of a neural network. Okay. And it is essentially known as MLP. What is that? MLP. Okay. So this is M. What is that? Multi-layer perceptron. Multi-layer perceptron. Okay. What happens here is you provide your input, and to each and every neurons which are there in between, the input will be passed, and finally you are going to get the output. Okay, this is the simplest understanding or simplest definition of a deep learning architecture or a multi-layer
perceptron, you can say. Okay. Now what we will do is we will break into it and we will try to understand that how this actually is going to work. There are two basic components of deep learning that you should know, the fundamental concepts that you should know, and then we will be getting into our discussion, which is RNN. But before that, again, since I talked about neural network, you should know. So this is the architecture of a neural network, and this is the figure. This is the architecture of a neural network. But what all neural networks do we have in deep learning? So basically in deep learning, we have three different kinds of neural network. What are they? You have ANN, artificial neural network. You have CNN, which is known as convolution neural network. And you have RNN, recurrent neural network. Okay. If you further study or if you further explore CNN, you will get into a new domain or a new realm of artificial intelligence known as computer vision. Okay, so computer vision ka you can say origin kahan pe hua? In CNN. Okay. So that is your computer vision. What about RNN? If you explore RNN further, you get into NLP or natural language processing. Fine. So if you talk about the applications of NLP, there are many applications. I will talk about them in some time. Okay, but this is the kind of understanding that we need to have. And because NLP has been derived from RNN, it is essential for us to understand this RNN. Okay, so we will talk about that. But before that, let us talk about the two important processes which are involved in your any deep learning model, not just RNN or CNN. किसी भी deep learning model में ये दो concept use होता है, which is known as forward propagation. I will mark it as like this arrow. Okay, this arrow shows forward propagation, means you are moving from left side to the right side, or you can say you are providing the input and you are getting some output. That is known as forward propagation. And what is the meaning of backward propagation? Backward propagation is something like this, the reverse, where you have the output with you and you want to get the input. So this is the backward propagation thing. So these are the two concepts that we need to understand, and then we will be getting into RNN. Okay? कोई doubt है अभी तक? Any questions? No. It's just that what is ANN? You just mentioned. अच्छा, ANN. So ANN stands for artificial neural network, and it is kind of a very trivial neural network architecture. बहुत basic सा है. इसका आगे कुछ further derivation हुआ नहीं, क्योंकि it is a very basic neural network. Okay, मतलब it's like the very first neural network which came into picture. उसके बाद advancement was CNN. CNN can be further explored into computer vision, and then RNN also came into picture, where you have the concept of NLP. अगर बात किया जाए input का, मतलब basically these three can be differentiated with respect to the input that they are good with. So CNN is good with images, okay, or you can say it is good with videos as well. Okay, so that is the idea of CNN. If I talk about RNN, RNN is good with text, or it is also good with sound, or you can say voice. Fine. So RNN talks about these two things, text or sound. CNN essentially talks about images and videos. ANN का क्या है? ANN talks about CSV files, or it can also do very मतलब बहुत अच्छा accuracy नहीं मिलेगा, but ठीक है, somehow manageable accuracy you will get with respect to images as well. Okay, so because CSV can be taken care of by machine learning better. Okay, if you are using a CSV file, or you can say an Excel sheet, and if you're giving it to a machine learning model, it will give you a better accuracy as compared to ANN. And I am telling you that ANN, or deep learning in general, has been derived after machine learning was explored, or after machine learning came into picture. So obviously, if we are talking about something which is more new to something which was there in the market already, so we are expecting कि उसका accuracy ज़्यादा हो, better accuracy हो, but that was something which we did not find in case of ANN. So ANN is just there, वो अभी भी है, exist करता है, but again it is not having much of a significance. क्यों? क्योंकि वो CSV फाइल को इनपुट में लेता है, और CSV फाइल
if you are talking about CSV file in general, if you pass it to a machine learning model, you're going to get better accuracy as compared to ANN. So obviously no use of using ANN there. Similarly, if you talk about images, so images पे already एक specialization, एक specialized neural network, which is CNN, is already into picture. So even if you don't use ANN for images, it is completely fine. Okay. Now is it fine? Is it Yes, clear? yes. Okay. So ये है आपका basic understanding. Now what we will do, we will try to understand this forward propagation and backward propagation. For that, what I will do is I will just take a small example. As I told you that deep learning is highly inspired from human behavior, from human intelligence, all these things, from human nervous system, right? So we can try to compare forward propagation and backward propagation with this idea. Okay. So what I will do is I'll take an example. Let's say there is this child. Okay. Let's say this is a 1-year-old child. Okay. And this child is just trying to learn how to walk. Okay. 1-year-old child, he or she is not able to walk properly. So what this child is doing is this child is actually trying to walk. Okay. So let's say this child is walking. Okay. She's walking all around. Okay. And after some point, this child has encountered that there is a pothole in front of it. Okay. India ka road, you already know. A road, or maybe in at times in houses also you have these problems, right? So there is a pothole in front of this child. Okay. Now, because this child is very young, this is just a 1-year-old child. For you and me, it is easy for us to differentiate that there is a pothole, so we should try to move over it. You know, we will just jump over it or something like that we will do. But this child, this is a very small child, and he or she has never experienced pothole before in his or her life. So what this child will do, he or she is not aware of what to do in such a situation. So maybe this child will move here, it will move ahead, and ultimately what will happen? This child will fall into the pothole and it will harm himself, right? The child will harm himself or herself. ठीक है? तो जब ये child pothole में गिरेगा and उसको चोट लगेगा, so there will be a penalty which will get registered in the mind of that child or in the subconscious mind of that child, saying that later on, next time in my life, if I come across a pothole and if I try to move on that pothole, ठीक है, उसके ऊपर से अगर हम पास करने की कोशिश करेंगे, तो I might get hurt, this might pain me again. ठीक है, तो ये जो पेन उसको हुआ, चोट जो लगा, वो क्या किया, उसको एक एक्सपीरियंस दिया. ओके, एक्सपीरियंस इन द फॉर्म ऑफ अ पेनल्टी बेसिकली. ओके, तो ये जो एक्सपीरियंस ये बच्चा सीखा while moving on this pothole will actually get registered in the subconscious mind of that child. ठीक है, fine. Now what happens? This child is here. वो गिरा, उसको चोट लगा, वो फिर से उड़ गया वो बच्चा. Okay, and now that child is again starting, and the child is walking again. Okay. After some point of time, what happens is this child will encounter that there are few staircases here. Okay, there are few staircases here. And again, as I told you, this is a very small child, बहुत छोटा सा बच्चा है. So maybe this child is not aware that how a person is supposed to climb this staircase. Okay, so again, what will happen? Again, this child will fall. है ना, उसको पता ही नहीं कि कैसे चढ़ना है, कैसे नहीं चढ़ना है. So again, this child will fall, and again, subconsciously, he or she will register some experience in the mind. कि हाँ यार, if there is a, let's say, staircase like this, I should call my parents, or I should avoid walking on that path. I should take some other path. I should return, okay, to my home, something like that. The child will be registering. Okay, क्यों? क्योंकि उसको चोट लगा, and that चोट is acting as a what? As a experience which is getting registered in the subconscious mind. ठीक है? अब क्या हुआ? Now this child got hurt, and again after some time this child stood up, and again he is moving ahead. Okay, तो ये बच्चा आगे बढ़ा, and then there is a wall in front of him. So he or she will not be moving ahead anymore. And what he will do if there is a wall in front of him? He will try to return. है ना? तो ये जो चीज हुआ, whatever we have seen right now, ये चीज, और let me use a different color, ये चीज from here to here
then from here to here. This is actually known as forward propagation. Okay, क्या कहते हैं इसको? Forward propagation. Okay, so basically what happens in forward propagation? Learning happens in forward propagation. Okay, this is a very simple thing to understand, but कभी-कभी students they get confused. ठीक है, तो फॉरवर्ड प्रोपगेशन में क्या होगा? लर्निंग होगा. यू कैन सी ना दिस चाइल्ड इज लर्निंग कि हाँ अगले बार अगर मेरे सामने पॉट होल आएगा तो आई विल ट्राई टू अवॉइड दैट पॉट होल. अगले बार ही मेरे सामने एक स्टेयरकेस आएगा तो आई विल ट्राई टू अवॉइड दैट स्टेयरकेस. आई विल टेक अनदर पाथ, आई विल रिटर्न, है ना? तो ये जो भी सीखा वो क्या है? दैट इज अ लर्निंग फॉर दैट चाइल्ड, राइट? थ्रू व्हाट? थ्रू द एक्सपीरियंसेस. ओके, so this is what? This is forward propagation. Fine. Now what happens is, since there is a wall, as I told you, since there is a wall in front of this child, what this child will do is he will return, है ना? और मान लो इसी रास्ते से वो वापस आ रहा है. Okay, so when he or she is returning, just a second, when he or she is returning, यहाँ पे उसको दिखेगा ये staircase. Okay, and staircase उसको फिर से दिखेगा, and because last time he got hurt because of that staircase, subconsciously वो चीज register हो गया है उसके दिमाग में. So what will happen this time? This time the child will avoid the staircase, okay, and he will take another path and he will come to this position without getting hurt. ठीक है, यही होता है human behavior में भी, right? This is how we have learned things since so many days, since so many years, right? तो अब क्या होगा? वो बच्चा staircase को avoid कर लिया successfully. इस बार उसको चोट नहीं लगा. Okay, and now this child is in front of this pothole or ditch, whatever. So again what this child will think? This child will be able to recall कि हाँ यार last time I got hurt, मेरे को ये register हुआ था penalty मेरे दिमाग में. Okay, so what I should do? I should again try to avoid this pothole and I should try to move ahead using a different path. Okay, तो अब क्या हुआ? This time when the child is returning, what happens is this child did not get hurt. कभी भी उसको चोट नहीं लगा, है ना? Why? Because of the learning that the child was able to do. ठीक है, and this is known as what? This is known as back propagation. Okay, this is known as back propagation when you are moving on the opposite direction. Okay, आप opposite direction में move करते हैं, and back propagation में क्या होता है? Forward propagation में चलो learning हो रहा है, back propagation में क्या हो रहा है? You are trying to avoid the chances of getting hurt, है ना? So the chances that you will make a mistake, okay? अब देखो learning कभी भी 100% नहीं होगा, okay? Neither for a human being nor for a artificial intelligence model. Okay, हमेशा ये चीज याद रखना कि learning will never be 100%. The models that we prepare, the accuracy that we get, it is never 100%. कभी भी 100% आ ही नहीं सकता है. ठीक है, even the AI of Google, which is considered to be the best AI in the world right now, the most superior artificial intelligence in the world right now is the Google's AI. Even that AI is having bias. ठीक है, उसमें भी bias है. So that is why I am saying कि you can never expect that this model or this AI will be giving you 100% accuracy. अब 100% accuracy नहीं है इसका मतलब क्या है? पूरा सही से learning नहीं हुआ है. पूरा सही से learning नहीं हुआ उसका मतलब क्या है? कि there are some problems, है ना? कुछ ना कुछ lacuna है अभी भी. For example, if I take a test of yours and if you are scoring 8 out of 10, that means कि you know 80% of the content, 20% of the content still needs to be worked on. Right? Same चीज यहाँ पे भी है. So back propagation में क्या होगा? You cannot say कि the learning will be 100% while you are doing a forward propagation. Okay? So when we are doing forward propagation, you cannot say that the learning will be 100%. इसका मतलब क्या है? कुछ ना कुछ loss होगा, कुछ ना कुछ error होगा, है ना? So back propagation में essentially what we do? We minimize the error component. Okay, कैसे किया जाता है? I will explain you in 5 more minutes. But ये basic सा understanding है कि we try to minimize the error component while we are performing back propagation. ठीक है, कहने का मतलब है कि just take a random example. मान लो
कि the learning which this child was able to do was let's say 70%. Okay, 70% learning हुआ इस child का. So 70% learn किया, 30% was the error or loss, you can say. Okay, loss was how much? 30%. Back propagation में क्या होगा? This loss we will try to minimize. इसको minimize करने की कोशिश करेंगे through back propagation. So maybe we will try to minimize this 30% loss to maybe 15% loss. तो अगर 15% loss आपके पास रह जाता है, what does that mean? आपका accuracy कितना हो गया? 85% हो गया, right? So this is what you can aim. This is what you can get through back propagation. ये बहुत important concept है. Try to understand this. Take a minute. Try to understand if it is clear or not. Then we will be proceeding ahead. This is तो human psychology के हिसाब से. Now we will be getting into deep learning. कि deep learning में ये चीज कैसे implement होता है. Just थोड़ा सा इसको देख लो. Tell me if it is clear. Hey Travis, so is it clear? Yeah, I'm going through 1 minute. Yeah, I think I am okay with it. Yeah. ठीक है, fine. So this is how humans learn, है ना? And this is not something new that I'm telling you. ये हम लोग सबको experience किए हुए हैं. I'm just giving you some new terms. For example, forward propagation, backward propagation, things like that. Okay. Now what we will do is we will try to understand the same concept using deep learning. Okay. So इसके लिए देखो, I will again, what I will do is I will take a data. ओके क्योंकि देखो यहाँ पे तो ह्यूमन आपका किसी पॉटहोल में गिर जा रहा है, किसी आई कैन से स्टेयरकेस से गिर जा रहा है, सो वो तो लाइक हम लोगों के लिए समझने के लिए है, फॉर अस टू अंडरस्टैंड. बट एज फार एज अ मॉडल इज कंसर्न, वी नीड टू हैव अ डेटा विथ अस. ओके, तो अगेन एक बहुत रिलेवेंट सा एग्जांपल आई एम टेकिंग यू फॉर यू, मतलब एक बहुत प्रैक्टिकल सा एग्जांपल आई एम टेकिंग. मान लो कि I am taking a data, I am creating a data which has the following columns. So एक column है playing बोल के, okay, और play बोल के एक column है, एक column है study and एक column है sleep. ठीक है, तो ये क्या है? ये basically एक data set है for 3 children, okay, for 3 children who are in their, let's say, school का वो बच्चा लोग है, okay, they are school going students. And what we need to do is, with respect to this 3 data, we need to make a future prediction that what is going to be the output. Let's say कुछ टाइम के बाद इन लोगों का एक एग्जामिनेशन है, so what is going to be the output? So let's assume there is this first child, okay, let's assume there is this first child. This child is playing for 3 hours, okay, this child is studying for 2 hours, and this child is sleeping for 8 hours. ठीक है, and the output is that this child will fail the examination. Okay. Similarly, एक और बच्चा है who is playing for 1 hour, he is studying for 4 hours, okay, and he is sleeping for let's say 8 hours, okay, and this child will pass. Fine. एक और student है, एक और student है, या हाँ कह दो student है, who is only playing for, or let's say who is not at all playing, okay, he is playing for 0 hours, he is studying for 5 hours, and he is sleeping for 7 hours, okay, and eventually what will happen? Even this child will pass. ठीक है, so it is just a simple data set which I have created for you, okay, just for you to understand. तो यहाँ पे क्या हो रहा है? This is the data set. Okay, now what we will do is we will try to understand from this data कि किसी भी बच्चा का पास करना किसी एग्जाम में या फेल करना एग्जाम में, उसमें सबसे इम्पोर्टेंट फैक्टर क्या है? सोना का घंटा को कम करने से वो बच्चा पास करेगा, या उसको बढ़ाने से वो बच्चा पास करेगा, स्टडी को बढ़ाने घटाने से पास करेगा, खेलना बिल्कुल ही बंद कर दे उससे पास करेगा, क्या करेगा, नहीं करेगा? दैट इज समथिंग व्हिच वी आर ट्राइंग टू
understand here. ठीक है? So basically what we will do is we will try to see what are the inputs here. The input is this, this and this. And what is the output? This is the output, right? This is a binary classification. Binary classification का मतलब क्या होता है? Either you will have 0 or 1. Okay, so this is the example of a binary classification. Right? Because binary में क्या होता है? Binary मतलब 2, है ना? तो binary में क्या होगा? You will have two conditions or 2 outputs. So either the child can pass or the child can fail. है ना? So ये चीज आपका यहाँ पे भी दिख रहा है. You can either pass or you will fail. वही यहाँ पे आपको डेटा सेट में भी दिख रहा है. So this is why this is the example of a binary classification. Okay, output will either be pass or fail. ठीक है? So let us try to understand how can we use this data for our model. Okay. So what we will do is we will be feeding our input. If you can recall this diagram, ये वाला diagram, what I told you, we will be giving the input first and then at the end we will be getting the output. ठीक है? So the same thing we will try to do here. Because we are having 3 input, number of hours dedicated for playing, number of hours dedicated for studying and sleeping. What we have is we have 3 input. So we will be creating 3 neurons in the input side. ठीक है? ऐसा 3 input बनाएंगे. Then I will be passing the inputs to something known as a hidden layer. Okay? एक hidden layer होगा and final में एक output layer होगा. यहाँ पर if I give you the nomenclature, this is known as a input layer. Okay, input layer. This is known as a hidden layer. You can have multiple neurons inside a hidden layer. You can have multiple hidden layers also. कोई यहाँ पे जाती नहीं है कि आपको एक ही hidden layer चाहिए, आपको 2 ही hidden layer चाहिए, कितना भी रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं. Okay, so hidden layer. Okay, and finally what you have is your output layer. Okay, this is the nomenclature that you should keep in mind. So if I come back to this diagram, यहाँ पे क्या है? You had 3 input, right? So 3 input है तो 3 न्यूरॉन बना दिए 3 input लेने के लिए, right? So यहाँ पे let's say I am giving the hours for playing, यहाँ पे I am giving the hours for studying, and यहाँ पे I am giving the hours for sleeping. ठीक है? Now what will happen is, as I told you some time back, the input from the neurons will be transferred to each and every neuron in the next layer. तो input layer से यहाँ पे गया, okay, hidden layer का पहला neuron में गया information, then यहाँ पर sorry यहाँ पर गया, then यहाँ पर गया, and then एक और यहाँ पर गया. ठीक है? So from the first neuron, the input has been transferred to all these 4 next neurons. ठीक है? Same चीज यहाँ पर भी होगा. Input will be passed to all other neurons here. यहाँ पे भी same चीज होगा. Okay? And finally, from these neurons also, the input will be transferred and you will ultimately be getting the output. Okay? You will ultimately be getting the output, and output will what? Will be what? It will be either pass or it will be fail. है ना? So either it will be pass or it will be fail. Okay? This is what? This is known as forward propagation. Okay? So forward propagation में क्या होता है? You are going to transfer the input from the input layer and finally you will be getting the output. ठीक है? ये समझ में आया? Is it clear? Yes, it's clear. Okay. So ये चीज तो आपका न्यूरल नेटवर्क के थ्रू हम लोग समझ रहे हैं.
Okay. Now what I told you is that you are going to learn something in forward propagation. ठीक है? So मान लो कि I am giving some information here. Okay. Let's say the playing hour is, let's say, 3 hours. Let's say study is 2 hours, and let's say sleep is 8 hours. ठीक है? Let's assume this is the data that I am providing here, the input that I am giving here. Okay. Essentially, from the data, you will be able to figure out that the output should be fail. Okay, output should be fail. You see, this is the first data that I'm giving into the input side. तो output क्या होना चाहिए? Fail होना चाहिए. Okay, output should be fail. But किसी भी चीज का जो भी आपको आउटपुट मिलेगा उसका कुछ ना कुछ कॉन्फिडेंस होगा. सो यहाँ पे फेल क्या बोल रहा है? लेट्स से इट्स इज सेइंग दैट द फेल इज 40%. मतलब ये बच्चा फेल करेगा, उसका कितना प्रोबेबिलिटी है? 40% प्रोबेबिलिटी है. बट यहाँ से अगर आप देखो ध्यान से, यू कैन फिगर आउट दैट द चांसेस ऑफ दिस चाइल्ड विल फेल इज 100%. ना, क्योंकि वो पढ़ने में टाइम ही नहीं दे रहा है. ही इज ओनली प्लेइंग एंड ही इज स्लीपिंग, राइट? He is not dedicating much of his time for studies. So obviously data से क्या समझ में आ रहा है कि the child is going to fail. Okay, but यहाँ पे हम लोग को न्यूरल नेटवर्क से क्या पता चल रहा है? The child is going to fail, but कितना परसेंटेज है उस बात का? you can say वैलिडिटी है only 40%. ठीक है, तो ये आपका क्या हो रहा है? एरर है. ठीक है, this is the error. So what we can understand here is, ये जो आपका आउटपुट है ना, always remember this output is known as actual output. Actual output. And the output that you get from the neural network, this output is known as predicted output. Because you are predicting this through the neural network. So this is predicted output. Okay? This is actual output, which is denoted by Y, and this is predicted output, which is denoted by Y hat. Okay? Predicted output. तो कहने का मतलब है कि अगर एक्चुअल आउटपुट था मेरा 100% दैट दिस चाइल्ड विल फेल, एंड मेरे को प्रेडिक्टेड आउटपुट मिला कितना? 40% दैट दिस चाइल्ड विल फेल. सो व्हाट इज द लॉस कंपोनेंट? व्हाट वी विल डू हियर, वी विल बी कैलकुलेटिंग द लॉस. सो कैलकुलेट लॉस. सो लॉस कैसे कैलकुलेट होता है? लॉस कैलकुलेट करने का एक बहुत सा सिंपल सा फॉर्मूला है, y माइनस y हैट होल स्क्वायर. तो y कितना था? 100% that this child will fail. आपका y hat कितना आया? 40% that this child will fail. Okay, तो कहने का मतलब है कि, and again if you square it, okay, तो how much are you going to get? This is 60 square, मतलब 3600. Okay, this is what this is known as loss component. Loss component. Okay, or you can say error component. You see यहाँ पे I had written एरर कंपोनेंट को मिनिमाइज करेंगे, है ना? सो यू कैन से आइदर एरर कंपोनेंट और लॉस कंपोनेंट, कुछ भी कहो, बात बराबर ही है. ठीक है, तो ये आया हम लोग का लॉस कंपोनेंट. एंड नाउ व्हाट वी नीड टू डू इज वी नीड टू मिनिमाइज दिस लॉस कंपोनेंट. ठीक है, इस लॉस कंपोनेंट को क्या करना है? वी नीड टू मिनिमाइज दिस लॉस कंपोनेंट. हाउ डू वी डू दैट? By back propagation. Okay, so I'm just writing BP here. Why? So ये कैसे होगा? यहाँ पे लॉस कंपोनेंट क्या करेंगे? बैक प्रोपगेशन के थ्रू क्या करेंगे? रिड्यूस करेंगे या मिनिमाइज करेंगे. ठीक है, इतना तक समझ में आया? Yes, yes. Okay. तो बच्चा फेल करेगा, वो श्योरिटी है 100%. एक्चुअल आउटपुट कह रहा है कि हाँ वो बच्चा पक्का फेल करेगा 100%. बट माय मॉडल इज सेइंग दैट द बच्चा विल फेल, इसका प्रोबेबिलिटी कितना है? ओनली 40%. ठीक है, तो 60% का स्क्वायर मतलब 3600 जो आपका लॉस कंपोनेंट है, इसको हम लोगों को क्या करना है? रिड्यूस करना है. क्योंकि लॉस अगर ज्यादा होगा इसका मतलब क्या है? एक्यूरेसी कम है. And what we try to achieve is, we try to achieve optimal accuracy. We cannot achieve 100% accuracy, but we try to achieve optimal accuracy. ठीक है, तो optimal accuracy कैसे आएगा? लॉस को रिड्यूस करने से. लॉस कैसे रिड्यूस होगा? by backward propagation. ठीक है, so what is the next thing? We have understood that we have moved from the left side to the right side, or in other words we can say we have performed forward propagation, and from the forward propagation we have learned something. हालांकि learning का accuracy उतना अच्छा नहीं है,
40% ही है. So what we will try to do is we will try to increase our learning, okay, or you can say we will try to reduce our problems or the error that we faced through back propagation. तो back propagation में क्या होगा? We will move in this direction, okay, we will move in this direction, उल्टा जाएंगे पूरा, fine. जैसे जैसे आपको इनपुट ट्रांसफर किया गया था, इस बार उल्टा ट्रांसफर होगा सब कुछ, okay. So this is how back propagation will be working, okay. So basically क्या होगा कि when you are performing back propagation, as I told you, this is your back propagation, okay, and this was your forward propagation. So when you are performing back propagation, you will encounter that the accuracy is increasing slowly and the loss is decreasing, ठीक है, ये चीज you will notice, okay. And one more thing that you should keep in mind is that one forward propagation and one backward propagation, दोनों को मिलाकर के क्या बनता है? One epoch बनता है, okay. So one epoch is equal to what? One forward propagation and one backward propagation. इन दोनों को मिला के क्या बनता है? एक epoch बनता है. And usually you will find in the coding classes that if the number of epochs are increasing, if you increase the number of epochs, let's say initially you kept the number of epochs as 5, मतलब 5 बार forward propagation, 5 बार backward propagation होगा. So कहने का मतलब है कि अब देखो आपको loss कितना आ रहा है? 3600 का, okay. And if you are trying to reduce loss, okay, so if you are trying to reduce loss by 5 epochs, what will happen is 3600 will reduce to, let's say, 3000, then it will reduce to, let's say, 2500, then let's say 2000. 2000 तक वो reduce हुआ if you are considering 5 epochs. If you further increase the number of epochs, the possibility of reduction in your loss will increase, okay. So if you increase the number of epochs, chances are more that the loss will decrease, ठीक है. तो usually we keep an optimal value of 10, 15 ऐसा कुछ रखते हैं epoch का value, ठीक है. And why is it kept high? Why do we keep high number of epochs? क्योंकि there is a direct proportionality between epoch, number of epochs, and loss. So if you direct नहीं, indirect कहेंगे. So if you are saying epoch is inversely proportional to loss, कहने का मतलब है अगर आपका epoch बढ़ेगा तो loss क्या होगा? घटेगा, ठीक है. So this is something that you can remember, okay. Is it fine? Forward propagation, backward propagation पूरा clear है? I think so, yeah. Okay, so this is something that we had to understand. Now what we will do is we will get into a bit more detail, है ना? Because again, आज का class will be a formal introduction only, so maybe I will not be able to get into RNN, but उससे पहले जो fundamentals है वो clear रहना चाहिए, because it is essential for you to understand the code. Code नहीं समझ में आएगा तो कोई मसला नहीं बनता है, ठीक है. So what we will do is we will understand कि ये backward propagation होता कैसे है, okay. I told you कि backward propagation होगा, but ये होगा कैसे, okay. That is a very important thing for you to understand, okay. And maybe if you are willing to get into some job related to NLP, maybe that will become a very interesting thing for you to understand. So let us understand कि backward propagation होगा कैसे, okay. Now see, okay. So देखो backward propagation में you need to understand something known as gradient descent, okay. तो क्या होगा कि if you are considering this data, play, study, sleep, output, यहाँ पे essentially you मतलब initially let's say you are not aware कि कौन सा component सबसे ज़्यादा important है for determining that whether a child will pass or fail, है ना. क्योंकि यहाँ पे you can see कि एक child जो 8 घंटा सो रहा है वो पास कर जा रहा है, एक child जो 8 घंटा सो रहा है वो फेल कर जा रहा है. So sleep is not a very important factor in that case. एक बच्चा जो 7 ही घंटा सो रहा है वो भी पास कर जा रहा है, एक बच्चा 8 घंटा सो रहा है वो भी पास कर जा रहा है. So there is some sort of ambiguity here,
राइट। सिमिलरली एक बच्चा जो बिल्कुल नहीं खेल रहा है वो भी पास कर जा रहा है, एक बच्चा जो 1 घंटा खेल रहा है वो भी पास कर जा रहा है ना। So there are some ambiguity here. Okay. So what we will do is we will be assigning something known as weights. Okay, we will be assigning weights to these parameters or to these features. So I will say W1, this is W2, sorry, let me just, this is W1, this is W2 and this is W3. ठीक है, तीनों पैरामीटर के लिए या तीनों फीचर के लिए आई हैव डिजाइंड 3 वेट्स। ठीक है, वेट का मतलब यू कैन से इम्पोर्टेंस, मतलब लेट्स से इफ आई एम टेलिंग यू दैट योर देयर इज टेस्ट ऑफ योर्स फॉर पाइथन, there is a test of yours for machine learning and there is a test of yours for let's say deep learning. ठीक है, पाइथन का टेस्ट है आपका 10 तारीख को, मशीन लर्निंग का टेस्ट है 12 तारीख को एंड डीप लर्निंग का टेस्ट है 15 तारीख को। सो ऑब्वियसली बिकॉज पाइथन का टेस्ट सबसे पहले है, यू विल गिव मोर इंपॉर्टेंस और यू विल गिव मोर वेट टू पाइथन, है ना। फिर मशीन लर्निंग को देंगे एंड फिर डीप लर्निंग को देंगे, क्योंकि डीप लर्निंग बहुत टाइम के बाद है, 15 दिन के बाद है ना, 12 दिन के बाद है लेट्स से। तो because deep learning is something which will come into picture later on, which is not having very importance, abhi turant mein aapko deep learning ka zarurat nahi hai, so what you will do, you will assign less weight to deep learning as compared to python. ठीक है, वही चीज यहाँ पे भी करने वाले हैं, W1, W2, W3. now problem is that neither you nor me, हम लोगों को पता नहीं कि W1 बड़ा होगा या W2 बड़ा होगा या W3 बड़ा होगा। ठीक है, we don't know that. Okay, so what we will do is we will be using a formula here. Okay, again you need not go into the technicalities of the formula क्योंकि you are not from that background, तो आपसे कोई formula नहीं पूछेगा, but again I am just giving you this formula for you to understand better कि ये formula actually में कहना क्या चाहते हैं। Okay, so whenever we are doing back propagation, what have I told you, that we will be minimizing the error component, है ना। अब एरर यू कैन आस्क मी हियर कि सर एरर कंपोनेंट को मिनिमाइज कैसे करेंगे, है ना। सो एरर कंपोनेंट को मिनिमाइज किया जाएगा बाय समथिंग नोन एज अपडेशन ऑफ वेट। Okay, through updation of weights what we do is we will be minimizing the error component. अब weights को updation का मतलब आप चाहे तो weight को increase कर दो, okay, या फिर आप वेट को डिक्रीज कर दो। कभी कभी स्टूडेंट्स दे हैव दिस मिसकंसेप्शन कि अपडेशन मतलब सिर्फ इंक्रीज ही होता है, नहीं, जरूरी नहीं है। ओके, अपडेशन का मतलब कुछ भी हो सकता है। सो अपडेशन का मतलब इंक्रीज, इसका मतलब डिक्रीज भी हो सकता है। ठीक है, कहने का मतलब है कि यहाँ पर ये जो W1, W2, W3 है, ओके, इनिशियली इफ आई एम सेइंग आई एम कीपिंग W1 as 10, आई एम कीपिंग W2 as 12, I'm keeping W3 as 15. ठीक है, ये मेरा इनिशियल वैल्यूज है। ठीक है, वेट अपडेशन में जब आप बैक प्रोपगेशन करेंगे तो हो सकता है कि आपका W1 रिड्यूस होके 8 हो जाए, आपका W2 रिड्यूस होके या इंक्रीज होके आपका 15 हो जाए एंड W3 आपका रिड्यूस होके लेट्स से 5 हो जाए, ये हो सकता है। ठीक है, तो यू कैन सी वेट बढ़ भी रहा है, वेट घट भी रहा है, कुछ भी हो सकता है। ओके, and how is it done, how is this done, this is done while you are performing back propagation. ठीक है, now again a question will arise कि सर ठीक है समझ गए कि बैक प्रोपगेशन में ये होता है, लेकिन अगेन कैसे होता है, राइट, दिस कैन बी अ क्वेश्चन फॉर यू कि ये होता कैसे। so for that we have a formula, basically एक mathematical formula है which says W new is equal to W old minus alpha partial derivative of loss with respect to partial derivative of W old. अच्छा रवि, in your standard 12th what stream had you chosen? कौन सा stream था आपका, साइंस या कॉमर्स? Mine was science, but then I have taken biology. अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं, you need not go into, as I told you, you need not go into the technicality of the formula, है ना, आपसे कोई फॉर्मूला पूछेगा नहीं। I'm just telling you, क्योंकि यहाँ पे आपको बस इतना समझना है कि ये जो पुराना वेट है W old,
ओके इसमें से आप कुछ माइनस कर रहे हैं, आपको बस इतना समझना है, ठीक है। ये कंपोनेंट एक्चुअली आई डिराइव दिस फॉर स्टूडेंट्स, ये पार्शियल डेरिवेटिव वाला चीज, बट अगेन सिंस यू आर नॉट फ्रॉम दैट बैकग्राउंड नोबडी इज गोइंग टू आस्क यू, एंड वो उतना जरूरी है भी नहीं आपके लिए, ठीक है। सो W ओल्ड में से हम लोग कुछ माइनस करेंगे, तब उन लोगों को क्या मिलेगा, W न्यू, ठीक है। इसीलिए कभी कभी स्टूडेंट्स दे थिंक कि सर जब अपडेट करेंगे तो कम ही होगा या बढ़ेगा ही, ऐसा दे हैव दिस मिसकंसेप्शन बिकॉज ऑफ दिस फॉर्मूला, बट ऐसा है नहीं, कुछ भी हो सकता है, बढ़ भी सकता है, घट भी सकता है। ओके व्हाट यू नीड टू रिमेंबर इज दिस अल्फा इज नोन एज लर्निंग रेट, लर्निंग रेट, ये आपसे पूछा जा सकता है। ओके कहने का मतलब है कि यहाँ पे व्हाट वी विल डू इज वी विल ट्राई टू अंडरस्टैंड हाउ इज दिस डन, ये वेट अपडेशन होता कैसे है। सो फॉर दैट आई विल अगेन, आपको मैक्सिमम मिनिमम तो नहीं मालूम होगा, सो आई एम नॉट गोइंग इनटू दैट डिटेल, जस्ट एज्यूम दिस इज अ पार्ट ऑफ योर ग्राफ, ठीक है। एक्चुअली इट लुक्स समथिंग लाइक दिस, एक आई एम जस्ट ड्राइंग, इसमें मतलब दिमाग ना लगे तो डोंट वरी, ठीक है। आई एम जस्ट ड्राइंग फॉर यू टू अंडरस्टैंड दैट कैसे होता है ये चीज, ठीक। सो let's say this is your graph, this is x-axis, this is y-axis, ठीक है। This kind of a graph that you might have seen maybe somewhere or the other, this is known as what, this is known as, मतलब this is a graph है ना, this is not known as thing, this is a graph है ना। तो इस ग्राफ में let me just थोड़ा सा इसको नीचे करते हैं, ठीक है। this is your graph, okay। अब इस ग्राफ में if we zoom in you will find कि there are multiple points, है ना। यहाँ पे एक ऊपर का स्लोप, एक ऊपर का पॉइंट है, नीचे का पॉइंट है। So all these points are known as maxima, ठीक है। ये जो पहाड़ का चोटी है this is known as maxima, and ये जो नीचे का पार्ट है these are known as minima, ठीक है। these are known as minima, ठीक है। जस्ट रिमेंबर दीज नेम्स, एंड जो मैक्सिमम में सबसे ऊंचा होगा, ओके जैसे कि ये पॉइंट है, दिस इज द हाईएस्ट इन मैक्सिमा, इसको क्या कहेंगे, इसको कहेंगे ग्लोबल, ग्लोबल मैक्सिमा, ठीक है। एंड मिनिमा में जो सबसे नीचे होगा, सबसे नीचे होगा, उसको क्या कहेंगे, उसको कहेंगे ग्लोबल मिनिमा, ठीक है। बस इतना याद रखो, डोंट रिमेंबर एनीथिंग एल्स, ठीक है। ये समझ में आ रहा है, बस इतना ही याद रखो, डोंट रिमेंबर एनीथिंग एल्स, ओके फाइन। सो व्हाट आई एम डूइंग इज आई एम नॉट कंसीडरिंग दिस एंटायर ग्राफ, इस ग्राफ का बस इतना सा हिस्सा आई एम कंसीडरिंग, ओके बस ये ग्लोबल मिनिमा वाला चीज आई एम कंसीडरिंग, ओके एंड आई विल बी शोइंग दैट पार्ट टू यू ऑन माय स्क्रीन, ठीक है। बस इतना पार्ट आई एम कंसीडरिंग, ठीक है। So let us go and let us come back to this. तो ये क्या है, ये वही ग्लोबल मिनिमा वाला ग्राफ है मेरा, ठीक है। अब ये क्या पॉइंट था, दिस इज ग्लोबल मिनिमा, आई टोल्ड यू, है ना। सो दिस इज ग्लोबल मिनिमा, ठीक है। अब परेशानी क्या है कि आपका जो लॉस है, ओके लेट्स से योर लॉस इज समवेयर हियर, ओके लॉस कंपोनेंट व्हिच इज हाउ मच 3600, है ना। So 3600 is somewhere here, okay, or you can say यहाँ पे भी है, कोई दिक्कत नहीं, दोनों साइड में से कहीं से भी ले लो। So loss is 3600, किधर से भी ले लो, does not matter, okay। आपको क्या करना है, आपको लॉस को reduce करना है, minimize करना है। So what we will try to do is we will try to come from this point, okay, we will try to come from this point to this point, यहाँ से लेकर के ग्लोबल मिनिमा तक पहुंचेंगे, क्योंकि ग्लोबल मिनिमा पे अगर आप पहुंच जाते हैं तो क्या होगा, आपका लॉस सबसे ज्यादा कम रहेगा ग्लोबल मिनिमा पे, ठीक है। सो सबसे कम लॉस कहाँ पे रहेगा, एट ग्लोबल मिनिमा, ठीक है। सो व्हाट वी डू इज वी विल स्टार्ट मूविंग फ्रॉम हियर लाइक दिस, ओके छोटा छोटा स्टेप्स लेके हम लोग आगे बढ़ेंगे एंड वी विल ट्राई टू रीच एट ग्लोबल मिनिमा, ठीक है। ऐसा कुछ, this is known as gradient descent, this entire concept that I discussed is known as gradient descent,
ठीक है, क्या होता है ग्रेडियंट डिसेंट में? यू विल ट्राई टू ब्रिंग योर लॉस टू द ग्लोबल मिनिमा पोजीशन। तो मान लो अगर लॉस यहाँ पे 3600 था, यहाँ पे अगर आप लॉस अपना कंप्यूट करेंगे तो इट विल बी लेट्स से 1000, ऐसा कुछ। ठीक है, तो आपका लॉस क्या हुआ? मिनिमाइज हो गया इफ यू आर कमिंग टू द ग्लोबल मिनिमा पोजीशन। ठीक है, अगेन एज आई टोल्ड यू, लॉस कभी जीरो नहीं होगा। लॉस जीरो होने का मतलब क्या है? एक्यूरेसी 100% हो जाना, एंड एक्यूरेसी कभी भी 100% नहीं होता है। Okay, that is why I'm not making loss as zero. I'm keeping it something like 1000 or 500 or 200, कुछ भी रखो, ठीक है, लेकिन वैल्यू रहेगा, कुछ ना कुछ वैल्यू रहेगा। If you think 1000 is a big number, you can make loss as 200, ठीक है, for your understanding। ठीक है, लॉस रिड्यूस हो गया आपका, फाइन। अब यहाँ पे लर्निंग रेट क्या है? लर्निंग रेट है द स्टेप साइज दैट यू आर टेकिंग। यहाँ से यहाँ आए, फिर यहाँ से यहाँ आए, फिर यहाँ से यहाँ आए, ये जो स्टेप साइज हम लोग ले रहे हैं दैट इज यूनिफॉर्म एंड दैट इज डिनोटेड बाय अल्फा, एंड यूजुअली द वैल्यू ऑफ अल्फा इज 0.01। ओके, व्हाट इज दिस? दिस इज लर्निंग रेट। लर्निंग रेट मतलब द स्टेप साइज दैट वी आर टेकिंग व्हाइल वी आर मूविंग फ्रॉम सम पॉइंट टू ग्लोबल मिनिमा। किसी भी पॉइंट से अगर आप ग्लोबल मिनिमा तक पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं, दैट इज नोन एज, मतलब जो भी आप स्टेप साइज ले रहे हैं, लेट्स से इफ यू आर वॉकिंग, so how much distance you are covering in one walk, in one step, that is known as alpha or learning rate। ठीक है, एंड ग्रेडियंट डिसेंट का यही कॉन्सेप्ट है जहां पे कि हम लोग लॉस को रिड्यूस करते हैं, मिनिमाइज करते हैं बाय रीचिंग एट द ग्लोबल मिनिमा। ठीक है, इतना समझ में आया? Yes, yes, yeah. Okay, so now what we will do is we will take two cases here। ओके, ये जो कंपोनेंट है आपका, जो आपको थोड़ा सा ट्रिकी लग रहा होगा, दिस कंपोनेंट यू कैन कंसीडर इट टू बी द स्लोप, है ना। स्लोप तो सबको पता है, स्लोप इज नॉट अ वेरी बिग डील, स्लोप तो सबको पता है। जैसे कि अगर मान लेते हैं ये आपका ग्राफ है, कीप दिस इन माइंड इफ यू आर नॉट अवेयर ऑफ स्लोप और इफ यू आर नॉट एबल टू रिकॉल व्हाट इज स्लोप। सो मान लो कि दिस इज योर ग्राफ, any point that is there on the left side of the slope, oh sorry, left side of the graph, okay, ग्राफ के लेफ्ट साइड में कोई भी अगर पॉइंट है, कहीं पे भी कोई भी पॉइंट है, उसका स्लोप नेगेटिव होगा, स्लोप विल बी नेगेटिव। ठीक है, एंड अगर कोई भी पॉइंट कहीं पे भी आपका राइट साइड में है, उसका मतलब क्या है? स्लोप विल बी पॉजिटिव। बस इतना याद रखो, ठीक है, इससे ज्यादा आपको जरूरत नहीं है। फाइन, कहने का मतलब है कि अगर आप यहां से चालू कर रहे हैं, ऐसे करके अगर आप मूव कर रहे हैं, तो आपका स्लोप क्या होगा? नेगेटिव होगा। एट द सेम टाइम अगर आप इधर से चालू कर रहे हैं, ओके, यू आर मूविंग लाइक दिस एंड यू आर रीचिंग एट द ग्लोबल मिनिमम, तो आपका स्लोप क्या होगा? पॉजिटिव होगा। ठीक है, जस्ट ट्राई टू रिमेंबर दीज 2 पॉइंट्स। ठीक है, नाउ व्हाट वी विल डू इज वी विल ट्राई टू अंडरस्टैंड कि ये वेट अपडेशन में हो क्या रहा है एक्चुअली। सो आई विल टेक वन सिनेरियो हियर, लेट अस अज्यूम कि आपका ये ग्राफ का ये हिस्सा है, आपको ये मिनिमम पॉइंट पर पहुंचना है, and this is where you are starting from. This is your loss component. You are starting from the left side and you are moving towards the global minima। ठीक है, आप ग्लोबल मिनिमा तक पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं, तो what have I told you कि यहाँ पे स्लोप क्या रहेगा? नेगेटिव रहेगा। ओके, सो if you look into the formula, W new is what? W new is equal to W old minus alpha। ओके, एंड स्लोप क्या होगा? आई टोल्ड यू स्लोप विल बी नेगेटिव, है ना। सो आई एम जस्ट राइटिंग नेगेटिव देयर। तो नेगेटिव इनटू नेगेटिव क्या होता है? पॉजिटिव, है ना। मतलब W old प्लस अल्फा हो गया, ओके, दैट विल बी W न्यू। मतलब W न्यू में कुछ ना कुछ कंपोनेंट ऐड हुआ है पुराना वाला W old के बाद। W क्या है? W इज द वेट। ओके, तो लेट अस अज्यूम इफ आई एम टेकिंग दिस सिचुएशन, मान लो W2 वाला सिचुएशन आई एम टेकिंग, ओके, W2 वाला सिचुएशन आई एम टेकिंग। तो इनिशियली व्हाट वाज W old? इट वाज 12। सो W old फॉर अस इज हाउ मच? 12। W new is how much? 15। मतलब
कुछ ना कुछ कंपोनेंट उसमें ऐड हुआ है ना. So W new will be increased. Okay, W new will be increased. वो एक बढ़ा हुआ वेट होगा. क्यों? ये समझ में आ रहा है? ये डेरिवेशन छोटा सा समझ में आया? Yeah. This is clear. So this is case 1. Similarly, we can have another case also. जब कोई इंसान let's say यहाँ से चालू कर रहा है. Again, he or she wants to reach at the global minimum, and he is starting from this point, and he is moving like this. ठीक है, वो यहाँ नीचे आ रहा है, and यहाँ पे I told you कि the slope will be positive. ठीक है, slope positive होने का again क्या मतलब है? Slope positive होने का मतलब है, if I write down the formula again, W new is equal to W old minus alpha. अब slope क्या है? Positive है, so I will write positive here. Negative into positive क्या होता है? Negative. So W old minus alpha, you are subtracting something from W old. मतलब आपका जो W new है वो क्या होगा? एक decreased value रहेगा, है ना? W new will be a decreased value. ठीक है. So इसीलिए I was saying some time back कि whenever you are doing weight updation, जरूरी नहीं है कि आपका weight increase ही करे या decrease ही करे. वो depend करता है कि आप किस तरफ से move कर रहे हैं. अगर आप left side से move कर रहे हैं तो आपका weight usually increase करता है. अगर आप right side से move कर रहे हैं तो आपका weight usually decrease करता है. And you have flexibility of moving from the left side or from the right side. कोई रोकने वाला नहीं. ठीक है. So that is why whenever you are performing back propagation, what will happen? Updation of weight will take place. Updation can either be increase in weight or it can be decrease in weight. For example, increase तो हम आपको दिखा दिए, decrease के लिए ये तो example देख लो, है ना? ये दो example देख लो. Fine. So आपका weight updation होगा, and that is why I am saying whenever you increase the number of epochs, let's say you are making epochs as 10 or 15, तो बार बार बैक प्रोपगेशन फॉर प्रोपगेशन होगा, आपका वेट अपडेशन होगा, एंड एसेंशियली टुवर्ड्स द एंड यू विल रीच एट दैट पोजीशन वेयर मोस्ट इंपॉर्टेंट फीचर विल बी हैविंग द मैक्सिमम वेटेज, द लीस्ट इंपॉर्टेंट फीचर विल बी हैविंग द लीस्ट वेटेज. ओके, minimum weightage will be given to the least important factor. Okay, and accordingly the accuracy that you will be getting वो सबसे ज्यादा अच्छा रहेगा. क्योंकि अगर आप ध्यान से देखो, स्टडी को अगर हम लोग सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस दें, फिर प्लेइंग को दें, फिर स्लीप को दें, तो दैट इज समथिंग दैट यू कैन have, that is something which is good, है ना? So if you are doing that kind of a thing, if you are achieving that kind of a thing, if you are having the correct proportion of weights assigned to your features, you can expect that the accuracy that you are going to get will be a good one. और वो एक बार में नहीं आता है, एक बार epoch run करने से नहीं आता है, वो बार बार करने से आता है. ठीक है. So this was, I know it was a bit technical, but ये फंडामेंटल है, ये थोड़ा समझना जरूरी था. That is why I have talked about all these things. So this was the introduction to deep learning. Next class में हम लोग आपका RNN के बारे में बात करेंगे स्पेसिफिकली. तो कोई डाउट